So Boolean algebra and logic circuit is basically it is introduced by English mathematician named George Boole. In 1854, Boole published a book called Investigation of Laws of Thoughts, right? On which basically he founded the mathematical theories of logics and probability. So Boole's system of logical algebra, now called Boolean algebra, and it was Boolean algebra, and later on it is studied by Claude E. Shannon at MIT. Shannon, he's basically from electrical engineering department, and he has written one thesis, right, called symbolic analysis of relay and switching circuit, right. So as a result of his work, Boolean algebra is now used extensively in the analysis and design of logical circuits. So today, Boolean algebra is the backbone of computer circuit analysis. Fine. So let me write down here George Boole. George Boole. George Boole has written a book. Has written a book, an investigation of laws of thoughts. An investigation of the laws of thoughts. Laws of thoughts is based on mathematical theories, mathematical theories of logic and probabilities. Right. Later on, Claude E. Shannon at Massachusetts Institute of Technology wrote a thesis, a symbolic analysis of relay and switching circuits. As a result of his work, Boolean algebra is now used, right? So today Boolean algebra is the backbone of computer circuit analysis. Computer circuit analysis. Okay. So basically, the whole Boolean algebra is based on two valued logical symbol, right? So it is basically two valued logical symbols. Two valued logical symbol, right? So the two level logical symbols are 1 and 0. Okay. So 1 is treated as high and 0 is treated as low. 1 is treated as true and 0 is treated as false, right? 1 is treated as on and 0 is treated as off, right? So these are the two valued logical symbols. Okay, got my point. So these are called fundamental concepts of Boolean algebra. These are called fundamental concepts of Boolean, right? So in Boolean algebra has only two mathematical operations basically, and these operations are called addition and multiplication, right? So Boolean algebra has only two mathematical operations and multiplication, addition and multiplication. Okay, so here addition is represented by OR gate. Addition is represented by OR gate, and multiplication is represented by AND gate respectively. Okay,
So first we talk about logical addition, right? First we talk about logical addition. Logical addition. So logical addition is done with the help of plus symbol, right? Logical addition is written with the help of plus symbol, right? And you can write it like this: 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, right? And 1 plus 0 is 1, and 1 plus 1 is 1. So this is a logical addition, right? And you can see that before this, it is basically till here. Here you can see that this is addition arithmetic. Addition arithmetic. This is addition arithmetic. But when both the values were one, when both the values were one, right? So therefore does not has the normal meaning, right? But it has the logical addition symbol, right? Here it is representing logical. So true plus true is true, right? Okay. So in logical addition, if any of the operator holds the value true, the result is true. Fine. So this is basically, we can say that the plus symbol read as or, okay, and therefore both the values, say for example the first value is represented by x and the second value is represented by y. So therefore we can say that x plus y is read as x or y. Okay. So the concept may be extended also. You can extend this concept, right? Even beyond this also. You can write as a plus b plus c plus d, right? That is equal to e. Okay. So it means even all the values were one, even if all the values were one, so the result is one. Okay, because we are not doing arithmetical addition, we are doing logical addition. Fine. So next thing you need to understand is logical multiplication. I hope logical addition is clear for everyone. If you have any question, you can ask me. Krishna, is it fine? Yes, sir. Okay. So next is logical multiplication. हितांश ठीक है ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ ठीक है. सर. बहुत easy सा idea है basically. Boolean algebra, one of the easiest thing. Next है logical multiplication. So logical multiplication is like 0.0 is 0, 0.1 is also 0, 1.0 is also 0, and when you multiply 1.1 you will get 1, right? So here you can see that it's all very simple, right? Both the conditions or both the operands must be true to get the output true, right? Here both x and y must be true or must be on to get the light on. Okay. So three of the basic laws of Boolean algebra are the same as in ordinary algebra, right? So here we can say that three of the basic laws of Boolean algebra are the same as in ordinary algebra. Right? So the laws are, so number one, the commutative law. Number two, the associative law. Number three is the distributive law, right? So these three laws were similar, right? So the commutative law is very much simple. A plus B is equal to B plus A, right? If you write A dot
B or B dot A, you will get the same result. So this is commutative law. Now the associative law. The associative law is A plus B plus C is equal to A plus B plus C. This is associative law. Or A dot B dot C is equal to A dot B dot C. So this is associative law. So you will get the similar result. And the last one is the distributive law, right? So distributive law is also very much simple. So it is A, B plus C. So you will get A into B, right? Plus A into C, right? So this is the distributive law, right? So note that while either plus or dot can be used freely, the two cannot be mixed without ambiguity in the absence of further rules. Okay. So what I'm trying to say that here in the distributive law, if you write here A dot B, A dot B plus C, okay, or A dot B plus C, right? Or A dot B plus C. So there is another distributive law, that is A plus BC is equal to A plus B multiplied by A plus C. This is the distributive law, right? So how you are getting these two, right? So let's start it from here, RHS, right? So what we do here, we multiply this A into A. So we write here A into A, right? So what is A into A, Krishna? Sir, A into A is A. A into A. A is A. So what is then behind it? 1 into 1 is 1, right? Yes. So that is why A into A is A. Okay. So here we got AC and then we got AB and we have got BC. Okay. So now you can see that here we have got A plus AC plus AB plus BC, right? And here we have got A common. So 1 plus, right? 1 plus C plus B plus BC. Okay. So 1 plus 1 is there, right? 1 is there. So if 1 is there, so result is automatically 1, because 1 plus anything is always 1, which we have studied earlier, right? 1 plus Yes. whatever variables are present. So the variable may contain 0 or 1. It is not going to be matter. So we are going to get 1, right? So the result is 1 here. So the result is 1. So we have got here A plus BC, and that is equivalent to LHS. So this is another distributive law. Okay. So these laws were very much similar to the ordinary algebra also. So let's move towards logic gates. सर Okay. एक क्वेश्चन था ऊपर. सर एक बार स्क्रॉल अप कीजिए ना. सर वो जो आपने A into B सर वहीं पे सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, आई मीन द एसोसिएटिव लॉ में, सर आपने AB ब्रैकेट्स में C into C किया है, which is equals to A into ब्रैकेट्स में B dot C. सर तो लेकिन अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो AB और BC is equals to AB AC आएगा. सर एसोसिएटिव लॉ का लाइक आपने मल्टीप्लिकेशन वाला जहाँ पे लिखा है. हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ब्रैकेट खोल देंगे. सर ब्रैकेट खोले तो AC और AC into BC आया, which is equals to AB into AC. सर लेकिन वो तो लाइक वो मैथ्स, आई थिंक तो मैथ्स थोड़ा सा भूल गए. सर लाइक BC तो लेकिन वो हुआ नहीं ना सर, वो AC. तुम ध्यान से देख. आई थिंक तुम मैथ्स थोड़ा सा भूल सा गया. तुम ध्यान से देख क्या है. ये डॉट है यार, डॉट. ओ सर मल्टीप्लिकेशन. अच्छा हमको लगा वो प्लस है एक्चुअली. ऊपर में प्लस है यार, क्या कर रहे हैं? सर एक क्वेश्चन था. हाँ.
सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जो आप प्रूव किए हो a प्लस बी सी इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस सी, सर वो आ सकता है क्या लाइक प्रूव करने के लिए? मेन चीज है, अभी एग्जाम में क्या आएगा हमको पता नहीं है। फिलहाल तो तुमको जो सिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन मत पूछना कभी भी लाइफ में मेरे से। सिखा रहा हूँ वो ठीक है सर। सीखते जाओ अच्छे से। एग्जाम बहुत आते रहेंगे जाते रहेंगे। समझ में आया ना मैंने जो सिखाया? हाँ सर, हाँ सर। ये भी नया खिलाड़ी है ना, इसको धीरे धीरे खेलना आ जाएगा। तो लॉजिक गेट्स की तरफ चलते हैं, फिर धीरे धीरे लॉज में आएंगे, लॉजिक गेट्स में रहेंगे, लॉज में रहेंगे, लॉजिक गेट्स में रहेंगे। तो फिर मैटर जो है ना समझ में आ जाए। वैसे लॉज बहुत सारे हैं, वो धीरे धीरे एक साथ पढ़ते रहते हैं हम लोग। सो लॉजिक गेट, लॉजिक is defined, a logic gate is defined as a electronic circuit. So logic gates जो है ना, there are two types of logic gates, 2 or 3 types, right? So logic gates so one is called, number 2 is universal gates, number 3 है basic gates, universal gate, and number 3 है, 3 क्या था, exclusive, x को capital रखते हैं, ये काम का है, exclusive। तो basic gates जो है वो, that is also 3 types. So number 1 is OR gate, number 2 number 2 is AND gate, and number 3 is NOT gate. ठीक है? So number 2 is universal gates. So universal gates are also of 2 types. One is NOR gate, right? And number 2 is NAND gate. NAND gate, right? And number 3 is exclusive gates. तो exclusive gates जो है वो है XOR gate and XNOR gate. XNOR gate, right? So first is OR gate. OR gate. OR gate is like this. The symbol is like this. Very much simple. This is OR gate, and these two are inputs. So if you supply here A and B, you will get here A plus B, and you can save this output in a variable called Y, right? So Y is equal to A plus B. Okay. So now we can draw a truth table for, so this is, here we can write down A, B. We can write this 0, 1, 0, 1. This is 0, 0, 1, 1. And here we get Y. So 0, 0 is 0. 0 and this is 1. So 1, 1, then 1. This is 1. So it is 1. Right? We will not check the next input. Right? If first input is 1, we will not check the next input. Okay. So this is about OR gate. So we can write few sentences for OR gate. Is that an OR gate, and OR gate is a logic circuit. Is a logic circuit with 2 or more, with 2. It can be more also, A, B, C, D also, with 2 or more input signals, with 2 or more and one output signal. The output signal will be high, and logic is high, means logic is 1. If any one input signal is high, that is logic 1. Okay. Or gate performs logical addition. So you can represent the OR gate using switches also, right? So if you design a parallel switch, this is not the part of the syllabus. As it came in my head, I am explaining it to you. This is a supply, and if you attach the supply, so if this is A and this one is B, so if both the switches are open, right? So this is open, both the switches are open.
right, then the lamp is not glowing. And when you attach a switch, you will find that lamp is glowing, right? If you attach B switch, then you will also find lamp is glowing. And if you attach both the switches A and B, then also you will find the lamp is glowing. So this actually demonstrate, this electrical circuit demonstrate the OR gate, right? So we can write here this electrical circuit demonstrate OR gate. Okay, so now the next is AND gate. Let's change the color for AND gate. So I hope you people understood the OR gate. It's very easy. Yes, sir. The next is AND gate. An AND gate is a logical circuit. With two or more input signals. And one output signal. The output signal of an AND gate is high. Or logic 1. Only if all input signals are high, or logic 1. Okay, so this is your AND gate. If you supply here A, B, then here you will get A dot B. Okay. So the truth table is very much simple. So you get here A, B, Y is equal to A dot B, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. And here you will get 0. This you will get 0. This is 1, then it will check this one, but this is 0, so output is 0. So this is 1, then output is 1. Okay. So if we want to draw electrical circuit, then it will be like this. A, this is B, and this is a lamp or LED, whatever. This is the battery. Okay, so this is A and this is B. So if both the switches are open, right, then the lamp is not glowing. If A is open and B is closed, then lamp is not glowing. If A is closed and B is open, then also lamp is not glowing. When A is closed and B is also closed, then circuit completes and the lamp is glowing, right? So this electrical circuit demonstrate the AND gate. Okay, I hope idea regarding AND gate is. So the next is inverters or NOT gate. Next is inverters or NOT gate. Okay. The symbol is also very much simple. Arrow with a bubble. So whatever input you will supply here, you will get the inverted output. So if you supply here A, you will get here A bar. Okay, got my point? If you supply here A, you will get A bar. Okay, and if you supply A, you will get here A bar, and if you put another inverter, right, you will get A bar, and that is equal to A. Okay, so this is another circuit where two inverters were applied, right? So here an inverter, we can say that, okay, so here if we draw the truth table, it is like this. A bar, A is 0, A bar is 1, A is 1, A bar is 0. Okay, so this is the truth table of inverter. Fine. So we can write here an inverter is a gate
is a gate with only one input signal, only one input signal and one output signal, and one output signal, and one output signal, right? The output signal is always the opposite or complement opposite or complement of the input signal. Okay. So an inverter is also called a NOT gate, right? An inverter is also called a NOT gate, because the output not the same as input, right? So say for example, here, if this is a complete circuit where the lamp is glowing, right? So you can put a switch like this. You can put up a switch like this. So this is a switch, right? And this switch is called A. When the switch is open, the lamp is glowing, right? And when you close the switch, your current will follow this path, right? And then lamp will not glow. Okay, got my point? When the switch is on or closed, right? When the switch is closed, the circuit will complete its path in this way. The electric current will complete its path in this way, right? So in other words, we can say that we are doing a short circuit here, right? This is an example of short circuit. Okay, so don't try to do this experiment at home because your home circuit may break down or there will be some problem. Okay, so this circuit, right? This electrical circuit is demonstrating the NOT gate, right? So I hope idea regarding NOT gate is clear. ये इलेक्ट्रिकल सर्किट वाला पार्ट नहीं समझ में, सर नॉट गेट वाला कौन सा वाला? इलेक्ट्रिकल सर्किट? हाँ सर, नॉट गेट का एग्जैक्टली कैसे हो रहा है? ये देख, यहाँ पे देख, ये ऐसे जा रहा है ना इलेक्ट्रिक करंट, ये ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट। स्विच ओपन है, स्विच क्या है? ओपन है। तो स्विच ओपन है तो इलेक्ट्रिक को तो यहाँ से उसको ग्राउंड मिलेगा नहीं ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, वो नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, तो उसको नेगेटिव मिलेगा ही नहीं। तो उसको नेगेटिव मिलेगा कहाँ जाके? उसको नेगेटिव मिलेगा इस तरीके से, ऐसे फ्लो करना पड़ेगा। हाँ सर, ठीक है। जब स्विच ओपन है, व्हेन द स्विच इज ओपन, ठीक है। और अगर स्विच क्लोज हो जाता है ना, अगर स्विच क्लोज हो जाता है, अगर दिस इज क्लोज कर दिया, तब वो इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा? तब वो ऐसे फ्लो करेगा। तो पहुंचा नहीं बल्ब तक, तो जलेगा नहीं। अच्छा ठीक है सर। हाँ सर, ठीक है। सिंपल सा ही। हाँ सर। कृष्णा, एनी क्वेश्चन? नहीं सर, समझ में आ गया। अच्छा ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा एक तो डुअलिटी करके चीज होता है वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा लॉज पढ़ते हैं, और फिर हम लोग यूनिवर्सल गेट्स में जाते हैं। सो बेसिक डुअलिटी इन बुलियन अलजेब्रा।
duality in state that we state the duality theorem uh, in the following okay. So number one is changing each or, that is plus sign, to an and, that is dot sign. Right? When we perform duality, we do this. The next is changing each and sign to an or sign. And the three is complementing each or complementing each. If there is 0 is present, we change it to 1, and if 1 is present, we change it to 0. Right? So for instance, a plus 0 is equal to a. Right? So what we have to do, we have to if we want to perform dual, right? So the dual relation is a plus sign will be changed to dot, 0 will be changed to 1, and there is an a. So we get a, right? So we can write here, right? Another instance, a b plus c is equal to ab plus ac, right? So this is by distributive law. Okay. So what we can do here, we can write this. There is a dot over here. Right? So this dot will be converted to plus sign, right? This plus sign will be converted to dot. So we get here BC, right? There is a dot here, right? A dot B. So we can write here A plus B, and this plus sign will be converted to dot, right? So this will become A plus C, right? And we have got the distributive law, right? So this duality is very much useful, right? Got my point? This duality is very much useful, right? So this is called basic duality in Boolean algebra. Okay. So now we talk about some fundamental laws and theorems of Boolean algebra. So fundamental laws and theorems of Boolean algebra. So number one is, say, a plus 0 is a. Number two is a plus 1 is 1. Number three is a plus a is a. Number four is a plus a bar is 1, right? Number five is a dot 0 is equal to, Achha, these are called OR operations. Right? And these are called AND operations. So a dot 0
is 0. Okay. Number 6 is A dot 1 is A. Number 7 is A dot A is A, right? And number 8 is very much interesting. A dot A bar is 0. So this is AND operation. Fine. So number 9 is A double bar, that is equal to A. So this is called double complement. Number 10 is X plus Y is equal to Y plus X. And number 11 is XY is equal to YX. So this is called what law? Anyone? What kind of law? Commutative law. Commutative law. Good. Commutative law. Okay. So number 12 is X plus Y plus Z is equal to X plus Y plus Z. So this is which law? Associative law. Associative law. कृष्णव सो गया क्या? नहीं सर, जाग रहा है, आंसर नहीं दिया, सोच रहा था। सोना मत. Associative laws. So the next is number 14. Number 14 is X. X. एक छोटा सा चीज करते हैं यार. A लिख रहा था ना, तो A B लेता तो बेटर होता. दिमाग में XX आने लग गया था. क्या था? और हाँ, B plus C is equal to AB plus BC. ठीक है. 15 वाला है A plus BC is equal to A plus B into A plus C. कौन सा लॉ है कृष्णा? सर डिसोसिएटिव. हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. और ये दोनों लॉ जो है ना, दे आर डुअल ऑल्सो. ठीक है. तो इसको हम लोग बोलते हैं डुअल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. राइट. अच्छा, नंबर 16 है A प्लस A B. तो आंसर आ जाएगा A. ठीक है. और 17 है A प्लस B. राइट. तो यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा A. सो दिस इज कॉल्ड लॉज ऑफ एब्सॉर्प्शन. ठीक है. प्रूफ करना पड़ेगा या हो जाएगा दिमाग में? सर एक बार प्रूफ कर दे तो समझ में आ जाता सर. एक कॉमन ले ले. 16 कर दीजिए सर. 17 तो ठीक है सर. 16 एक बार समझा दीजिए. अच्छा सर. हाँ सर, में एक कॉमन ले ले. 1 प्लस B आ जाएगा. 1 प्लस एनीथिंग इज 1. तो A बचेगा. 17 वाला भी सेम है. अगर 17 समझ में आ गया तो 16 तो बच्चा है यार. हाँ सर, वही तो सर. ठीक है. चलो, कृष्णा समझ में आ गया ना? हाँ सर, समझ में आ गया. अच्छा, ठीक है. सो नेक्स्ट हो गया 18 में है A प्लस, एक और था A प्लस, हाँ, A बार B. A प्लस A बार B. ठीक है. तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा A प्लस B. ठीक है. और 19 बन जाएगा A और A बार प्लस B. तो ये आ जाएगा AB. ठीक है. इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी थ्योरम. नेक्स्ट है तुम्हारा डी मॉर्गन्स थ्योरम. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. 20 हो गया. डी मॉर्गन बोल रहा है A प्लस B होल बार इज इक्वल टू A बार डॉट B बार. ठीक है. एंड 21 में
A dot B whole bar is equal to A bar plus B bar, right? So this is De Morgan's theorem. Morgan's theorem. Theorems, right? So this is De Morgan theorem. तो इसको प्रूफ करते हैं De Morgan को भी, ठीक है? तो De Morgan को प्रूफ करने के लिए हमको चाहिए होगा ट्रूथ टेबल. अब बना लेते हैं ए बी, ठीक है, ए प्लस बी होल बार बैठा लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है, देन ए बार, फिर बी बार, फिर ए बार डॉट बी बार, ठीक है, और ए डॉट बी होल बार, और इधर बैठा लेते हैं ए बार प्लस बी बार. फाइन. So let's draw some line 1, 2, 3 and 4. ठीक है, और यहाँ पे बैठा देते हैं 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. So A plus B बार 1 आएगा, ठीक है, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा. A बार 1, 1, 0, 0, B बार 1, 0, 1, 0. Fine. So A bar dot B bar, तो 1, 0, 0, 0. देखो, these two columns are equal. These two columns are equal. So it is proved, right? फिर देखो A dot B का होल बार है, ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 0, right, 0, 0, okay, and यहाँ पे है A bar plus B bar, तो A bar is 1, right, plus B bar, तो यहाँ पे 1 आ गया. फिर सर ए डॉट बी बार आप उल्टा कर दिए सर, 0, 1, 1, 1 होगा. हाँ, राइट राइट, ए डॉट बी होल बार, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा तो 1 होगा, ये 0 आएगा तो 1 होगा, ये 0 आएगा तो 1 होगा, और ये 1 आएगा तो 0 होगा, राइट. तो ये 1 हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 1 एंड दिस विल बी 0, ठीक है. तो ये दोनों प्रूव हो गए. सब बार जो है वो लाइक उसका कॉम्प्लीमेंट है क्या? कॉम्प्लीमेंट है, डेफिनेटली. बार मींस कॉम्प्लीमेंट. ओके. तो हम लोग यूनिवर्सल गेट्स पढ़ सकते हैं. तो नंबर 2 है यूनिवर्सल गेट्स, बिकॉज यूनिवर्सल गेट्स इज अ एप्लीकेशन ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम, ठीक है. सो फर्स्ट था नॉर गेट. नंबर 1 इज, तो फर्स्ट इज नॉर गेट. तो नॉर गेट का जो सिंबल है वो कुछ इस टाइप में होता है. लोग और गेट का सिंबल ही बनाते हैं एंड ये और गेट के सामने एक बबल बैठा देते हैं, तो दिस विल बिकम नॉर गेट, ठीक है. तो यहाँ पे आप ए डालते हो, यहाँ पे बी डालते हो, यहाँ पे मिलता है ए प्लस बी होल बार, ठीक है. दिस इज इक्वल टू वाई. उसका ट्रूथ टेबल भी बहुत सिंपल है. तो ए बी 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 एंड ए प्लस बी होल बार, ठीक है. तो आउटपुट क्या आ जाएगा इसका? 1, ठीक है. इसका आउटपुट आ जाएगा 0, इसका आउटपुट आ जाएगा 0, इसका आउटपुट आ जाएगा 0, ठीक है. सो ये हो गया आपका नॉर गेट, और इसको हम लोग यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं. और यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं कि इन नॉर गेट, तो नॉर गेट में भी क्या होता है कि इन नॉर गेट we can input, एक मिनट, आई बड़ा we can input two or more signals, two or more signals, but we get only
only one output signal, right? Output signal. In NOR gate, we get the output of inverted OR gate, inverted OR gate. ओके, तो हम लोग को आउटपुट में क्या मिलेगा? इन्वर्टेड OR गेट. ठीक है, सो दिस इज NOR गेट. नाउ नंबर 2 इज NAND गेट. नंबर 2 इज NAND गेट. NAND गेट क्या होता है कि ये बनाया एंड इसके आगे बबल लगा दिया. अच्छा, एक चीज हम भूल गया था यहाँ पे OR गेट NOR गेट में बताने के लिए. वन थिंग आई फॉरगॉटन. The thing is this, कि in NOR gate you can use OR gate and NOT gate also. ठीक है, so A, B, and here you will get A plus B. So this output will be entered into the NOT gate. So you will get here A plus B whole bar. Okay, so you can use either circuits, right? Circuits, but this is more costlier, so no one uses. This is less costlier, so everyone uses this gate. Okay, so NAND gate, right? So A, B, and here you will get A dot B whole bar. Okay, so the truth table is also pretty much simple. This will be A, this is B, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. So A dot B whole bar. So here you will get 1, here you will get 1, here you will get 1, and here you will get 0, right? So this is A dot B whole bar. Fine. So here in NAND gate also you will have the same kind of a concept. AND gate and NOT gate will be there. Here you supply A, B, here you will get A dot B, and here you will get A dot B whole bar. Okay, so in NAND gate we can input 2 or more signals, but we get only one output signal. Okay, in NAND gate we get output of inverted AND gate. Right? So why we use, the next question arises, why we use universal gate? The big question in the head of Krishna, why we use universal gates. सर एक क्वेश्चन था सर, लाइक उसी से ऊपर ऐसे रिलेटेड था सर. लाइक आप बोले थे कि हम लोग यूनिवर्सल गेट्स यूज करते हैं वो एंड और नॉट की जगह, क्योंकि वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है. ये वाला ऊपर में ना. हाँ सर, ये एंड गेट है, ये नॉट गेट है. तो 2 गेट लगाएगा ना तो जगह ज्यादा लगेगा. हाँ सर, एफिशिएंट कौन सा ज्यादा होता है सर? लाइक कौन सा ज्यादा फास्ट एफिशिएंट होता है? जगह कम लेगा और काम सेम करेगा. अच्छा, ठीक है, 2 गेट लगाएगा तो जगह ज्यादा लगेगा ना. घर में अगर तुम्हारे पास 2 दरवाजा हो घुसने के लिए, हाँ सर, तो तुम्हारा एरिया कम हो जाएगा, लिविंग एरिया कम हो जाएगा. सेम कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो इसीलिए मतलब ये वाला ही यूज में आता है. अगर ये नहीं है तो, अगर ये दोनों है अवेलेबल तो लगा दो यार, कस्टमर को सेटिस्फाई करो. अच्छा, ठीक है सर. चलो, तो अभी कृष्णव का दिमाग वाला क्वेश्चन आंसर देते हैं. व्हाई वी यूज यूनिवर्सल गेट्स. कृष्णव कोई आइडिया बना व्हाई वी यूज यूनिवर्सल गेट्स? नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा है.
समझ में आ रहा है ना कृष्ण, क्लास समझ में आ रहा है ना, इजी है। सर मतलब समझ में आ रहा, लाइक ये वाला क्वेश्चन का आंसर सोच रहा है। अच्छा सोच रहे, अच्छा थोड़ा देर सोच लो। सर नहीं पता। अच्छा ठीक है, तो मैं दे देता हूँ। वाई वी यूज यूनिवर्सल गेट, इसका हम एक और मतलब इम्प्लीमेंटेशन कराएगा सैटरडे को 4 बजे, ठीक है। हितान सैटरडे 4 बजे भी क्लास होगा हाँ तुम्हारा। तो अ यूनिवर्सल गेट, अ यूनिवर्सल gate is a logic gate which can implement which can implement any boolean function, any boolean function, तो इसे हम कुछ भी बना सकते हैं, any boolean function without the need to use any other type of logic gate, without the need to use any other type of logic gate. सर तो बेसिकली एक यूनिवर्सल गेट यूज करने पे ही सब कुछ हो जाएगा। हाँ यूनिवर्सल गेट है, जैसे नॉर गेट यूज करके तुम सारा गेट बना सकते हैं जितना एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नैंड गेट यूज करके भी बना सकता है, ठीक है। so this means so that is why NAND, the NOR gate and NAND gate are universal gates, this means you can create, this means that you can create any logical Boolean expression using only NOR gates or only NAND gates, right? So in practice, this is advantageous since NOR and NAND gates are economical and easier to fabricate than other logic gates, so much so that an AND gate is typically implemented as a NAND gate followed by an inverter, not the other way around. Similarly, an OR gate is typically released as a NOR gate followed by an inverter, ठीक है। तो ये इनको फैब्रिकेशन में इजी रहता है, ये काफ़ी सस्ता मिलता है, 50-60 रुपए में आ जाता है एंड यू कैन बाई इट वेरी इजीली, राइट। और अगर आप NAND गेट यूज कर रहे हो या NOR गेट यूज कर रहे हो तो यू कैन डिजाइन द OR गेट और AND गेट वेरी इजीली यूजिंग NAND गेट और NOR गेट, ठीक है। तो नेक्स्ट डे वी विल स्टडी, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड NAND to NAND लॉजिक पढ़ाएगा हम, NAND to NAND लॉजिक, ठीक है। और हम पढ़ाएगा NOR to NOR लॉजिक, और पढ़ाएगा बचा हुआ है एक्सक्लूसिव गेट्स पढ़ाएगा। और अगर टाइम बच गया तो हम पढ़ा देगा तुम लोग को एडर्स पढ़ा ही देगा, एडर्स करा ही देगा, टाइम बचे नहीं बचे। आई विल टीच यू एडर्स, हाफ एडर एंड फुल एडर, यही 2 सिलेबस में पढ़ा ही देगा, हाफ एडर एंड फुल एडर, ठीक है। बस तो सिलेबस हो जाएगा खत्म। हाँ सर ठीक है, फिर तो एग्जाम वगैरह रहेगा तो फिर तुम लोग उसमें लगा हुआ रहेगा, ठीक है। हाँ ठीक है सर। तो तुम लोग का काम बनता है थोड़ा एक्सरसाइज को सॉल्व करना चालू करो, बुक में जो दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में, ठीक। और हाँ ठीक है, फिर चलो फिर आज इतना ही रखते हैं, हम तुमको ये नोट्स अपडेट कर दे रहे हैं थोड़ी देर में।